Hello students, myself Dr. Jayanta and welcome to my YouTube channel. Now we are going to start class 9 French Revolution. देखो इसमें क्या है, what is revolution? Whenever the ordinary people without getting any satisfaction from their ruler, they desire to overthrow the ruler by applying forceful means, then the revolution takes place. So, in France, the people, those who are called French people, they involved themselves in the revolution to overthrow their existing ruler, that is Louis XVI. Now, the question arises, why they desired to overthrow Louis XVI? Or in other words, if we discuss in that way कि what type of social, economic and political condition prevailed in France which compelled them to bring about revolution. देखो, during that time in France, the entire society was divided into three broad categories. First one is called the first estate or the clergy, that means those who were under the responsible of churches, special privileges, special privileged people, those who are in responsible of church, that is called clergy. Next one is nobility, that means privileged class, and rest of the people, that is third estate. So, these were the social stratification or social divisions of the France during that time. You just consider the case, इस टाइम मतलब दो जो अपर क्लासेस था, क्लर्जी या नोबिलिटी, इन दोनों को टैक्स से एग्जाम्प्टेड कर दिया था, लेकिन पूरा का पूरा टैक्स जो है थर्ड एस्टेट या फिर ऑर्डिनरी पीपल जो है, मतलब पीजेंट्स, आर्टिशियंस, बुर्जुआजी, smaller businessmen, officials, they were overburdened with these taxes. So as a result, इन लोगों को क्या हुआ, बहुत गुस्सा हो गया. ये किंग क्या कर रहा है, देखो इसमें क्या है, फर्स्ट एस्टेट जो है मतलब रोमन कैथोलिक चर्च के रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर था, ये उन लोगों को बताएगा क्लर्जी और फर्स्ट एस्टेट. सेकेंड एस्टेट मतलब नोबिलिटी, मतलब it consisted of nobles, about 2% of the population. देखो यहाँ पे 2% पॉपुलेशन जिन्होंने 20% ऑफ वेल्थ को कब्जा कर रखा था, और जो थर्ड एस्टेट मतलब all the rest of the section of society, city worker, peasants, bourgeoisie, etc., etc. Now these population were 80% and they had to pay all the rest of the taxes, but their income was not satisfactory, yet over taxes were prevailed on them. Now the question arises, क्यों ऐसा क्यों हुआ, why the situation appeared, why the France is bankrupt. देखो जब लुई 16 मतलब जो उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड था, बहुत लेविशली लाइफ लीड करता था, उसके पीछे बहुत सारा मनीस यूज़ करता था, और उसका जो वाइफ था क्वीन मैरी एंटोनी, वेस्टफुल स्पेंडर, शी वॉज ट्रीटेड एज वेस्टफुल स्पेंडर, इतना सारा मनी वेस्ट करता था. देखो उनका जो ड्रेस बना रहा है, एक ड्रेस के लिए कितना सारा पैसा वेस्ट होता था. नेक्स्ट थिंग इज दैट गवर्नमेंट फंड्स जो है डिप्लीट हो गया था. क्यों? क्योंकि 13 अमेरिकन कॉलोनीज जब वार में एंगेज था, उस टाइम फ्रांस ने इनको हेल्प किया था. और फिर गवर्नमेंट क्या किया, टैक्स का रेवेन्यू मतलब टैक्स इंक्रीज कर दिया था, लेकिन इसका जो प्रिविलेज्ड क्लासेस था उन लोगों को टैक्स से रिहा कर दिया था. ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब सिचुएशन ऐसा होना ही होगा. अब देखो व्हाट आर द मेन पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. देखो when at the time of ascending the throne, Louis XVI found
ट्रेजरी वॉज एम्प्टी, ट्रेजरी में कुछ भी नहीं था। फिर कैसे चलेगा कंट्री, अब तो टैक्स बनाना ही होगा। फिर वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प करने जब लगा फ्रांस ने, उस टाइम फ्रांस का बहुत सारा पैसा निकल गए। फिर क्या हुआ, वो जो वर्साइलिस में जो पैलेस था, पैलेस का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ गया था। और इन्होंने क्या किया, लेंडर्स जो है, मतलब जहाँ से मानी लेंडिंग करता था किंग ने, उन लोग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया था। और रेगुलर जो एक्सपेंसेस था इतना बढ़ गया, मतलब आर्मी के लिए, कोर्ट के लिए, ये सारा पैसा किंग को देना ही होता था। उस टाइम क्या किया उन्होंने, एक चीज देख लिया, यू जस्ट इंक्रीज द टैक्स लेवल, देन वी कैन इंश्योर ऑल दिस एक्सपेंडिचर। बट ऑर्डिनरी पीपल they were not considered these things in a good manner, definitely not। कोई भी ऐसा ठीक से नहीं लेगा कि जिसके पास पैसा इतना है उन लोगों को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया जाए, और जिसके पास पैसा नहीं है उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के ओवरबर्डन कर दो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज सोशल कॉल्स। देखो सोसाइटी में 3 स्टेट्स था। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो था, मतलब क्लार्जी एंड नोबिलिटी, they were enjoyed special privileges based on birth। क्या स्पेशल प्रिविलेज क्या था, they were exempted from paying taxes to the state। उसके बाद देखो उस टाइम फ्यूडल लॉर्ड्स था बहुत। ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो है ना, इन लोगों को भी टैक्स से रिहा कर दिया था। और ऑर्डिनरी पीपल जो था उन लोगों को 2 टाइप का टैक्सेस देना होता था। चार्ज उन्होंने दावी किया था, मतलब 33 चार्ज को देना होता था। उसका अमाउंट था, मतलब कितना अमाउंट, 1/10 पोर्शन ऑफ द टोटल प्रोडक्शन चार्ज को देना होगा इन द नेम ऑफ 33। और टेलिस मतलब द चार्जेस which is supposed to be paid to the government 1/3, that means 1/10 पोर्शन इसको 33 मतलब चार्ज को देना होगा और 1/3 पोर्शन गवर्नमेंट को देना होगा। ये जितना सारा प्रोडक्शन हुआ इसके हिसाब से ऐसा ऑर्डिनरी पीपल को टैक्स देने में निकल जाता था। फिर देखो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है। ड्यूरिंग दैट टाइम पॉपुलेशन इन फ्रांस इंक्रीज्ड फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन। नेचुरली फूड ग्रेन का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन किंग जो था, किंग का कुछ ऐसा कुछ मतलब दे डिडंट हैव एनी थिंकिंग हाउ टू कलेक्ट दीज फूड ग्रेन्स, एंड एज ए रिजल्ट द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज्ड, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा था और बाहर से कोई ला नहीं रहा था, इसीलिए ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया। इसके साथ वेजेस जो था, ये वेजेस बहुत ऑर्डिनरी था, मतलब वेजेस ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन ऑर्डिनरी गुड्स का प्राइस बहुत इंक्रीज कर लिया था। इसीलिए क्या हुआ, सबसिस्टेंस क्राइसिस अपीयर हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस। देखो, अ सिचुएशन when the population increases, the demand of food grain increases, but the supply is not adequate, the king is not doing anything, as a result the price of essential commodities is increasing. This situation is called subsistence crisis. This is one of the new word for French Revolution. Now if we summarize the prime causes of French Revolution, then we can see the main causes are एब्सोल्यूट मोनार्की, किंग जो था उन्होंने उनको एब्सोल्यूट पावर दिया गया था। फिर करप्ट लीडरशिप, क्योंकि किंग जो था ही इज नॉट अटैच्ड वेरी मच विद द एडमिनिस्ट्रेशन, रादर ही वांटेड टू कैरी आउट लेविशली लाइफ, एज ए रिजल्ट दोज हु आर इन पावर दे बिकम वेरी मच करप्टेड। नेक्स्ट थिंग इज अनफेयर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फार्मर्स को जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना होगा था बहुत अनफेयर मीन से हुआ था। फिर अनफेयर टैक्स कोड, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को छोड़ दिया, थर्ड स्टेट को टैक्स चपा दिया। फिर रिजिड सोशल स्ट्रक्चर, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट जो है यहाँ पे कोई अंदर नहीं जा सकता। ये थर्ड स्टेट वाले का कितना सारा टैलेंट हो
they are not allowed to get access in first or second classes. Next thing is privileges of the फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट यहाँ पे दिया हुआ था. फिर स्प्रेड ऑफ एनलाइटनमेंट आइडियाज मतलब वॉल्टेयर, रूसो, जाजैक मतलब हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली, इतना सारा राइटर्स जो था इन लोगों का राइटिंग्स सामने आ गया. इन लोगों ने क्या किया, ऑर्डिनरी पीपल का आंखें खोल दिया. नेक्स्ट थिंग गवर्नमेंट डेट्स और डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब किंग को जहाँ से पैसा लोन में लेना पड़ता था, गवर्नमेंट बहुत डेप्थ में पड़ गया था. फिर पुअर हार्वेस्ट मतलब उस टाइम प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा था. इन्फ्लेशन मतलब पैसे का वैल्यूएशन घट गया. फिर फेलियर ऑफ लुई 16 टू एक्सेप्ट रिफॉर्म क्योंकि उस टाइम जो लिबरल पीपल था जो डिमांड कर रहा था लुई 16 उनको फुलफिल करने में व्यर्थ हो गया. फिर फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, जब नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ उस टाइम उन्होंने बोला कि देखो भाई किंगशिप बहुत हो गया, अब हमको रिपब्लिक फॉर्म करना है. नेक्स्ट थिंग इज स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, राजा का जो घर था स्टॉर्म हो गया मतलब जला दिया. नाउ what are the positive effects, what are the causes, just now we have discussed. Now the next thing is what are the positive effects of French Revolution. देखो first thing is that declaration of right of man and citizen, this is the most vital point. Whenever they introduced the new constitution, it contained the first page that is declaration of right of man and citizen, which implies that all the citizens and the man, that means those who are not citizen, they are entitled to ensure certain rights. Next thing is France adopts its first written constitution. Till date there was no written constitution of the France. Whatever the monarch is saying, that is the final. Now they have started to write a constitution. Next thing is monarchism abolished and feudalism also abolished. Estate general also abolished. Instead of that, national public schools were set up so that education can be spread among the ordinary people. Huguenots are granted equal rights. That means फ्रांस में जो प्रोटेस्टेंट्स था उन लोगों को ह्यूगेंट्स कहा था, मतलब दे आर कॉल्ड ह्यूगेंट्स एंड दे हैव गिवन इक्वल राइट्स. नेक्स्ट इज ज्यूज आर ग्रांटेड इक्वल राइट्स. दैट मीन्स ऑल द पीपल other than French people, all the people they got equal rights and all the demands they were for which they were crying, all these are granted. Now some negative effects are also there. See, the people, that means the half of that society people, social people, that is women section, the women section at the initial stage they got the power, but later on they had to lost the rights because Robespierre and later Napoleon they did not entertained. That's why at the initial stage women got the right, but gradually they had to give up during the period of Robespierre and Napoleon. Next thing is slavery in the colonies is abolished under Robespierre, but Napoleon reintroduced slavery. Next thing, Napoleon used a secret police force to track down his enemies. मतलब those who were the enemies of Napoleon, he just tracked them and introduced severe punishment. Napoleon introduces censorship of the press. That means no one can write down against the government, against the king. This is called censorship. Napoleon allows police to use tortures to extract confessions. मतलब जो आदमी अपराध किए है नेपोलियन ने पुलिस को पावर दे दिया था कि चलो तुम लोग जितना चाहे पिटाई कर लो, इन लोगों को इसको कबूल कराना होगा. People who are enemies of Napoleon are imprisoned without trial. मतलब जो आदमी नेपोलियन के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहेगा पहले उनको जेल में डाल दो
और इसका कोई ट्रायल नहीं होगा, जितना दिन चाहो जेल में रख दो। दीज आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज टेनिस कोर्ट ओथ। देखो थर्ड स्टेट का जो पीपल था उन लोगों को लगा कि देखो भाई हमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, किसी भी हालत में हमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। लेकिन कैसे लेना होगा? उन लोगों ने क्या किया, वर्साइलिस में एक सेंट लुइस जगह है, वहाँ पे 20 जून 1789 थर्ड स्टेट पीपल फाउंड देमसेल्व्स impermeable of their regular meeting of place, and the member were signed an oath that they would not stop meeting until they will rewrite France's new constitution. They wanted to rewrite France's new constitution and they wanted to limit the power of the monarch. So what is tennis court oath? देखो यहाँ पे वेरी सिंपल चीज़ है। जो थर्ड स्टेट का आदमी था उन लोगों ने सोचा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना है और हम लोग मीटिंग तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड टेनिस कोर्ट ओथ। ठीक है, अब देखो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन क्यों हुआ? फर्स्ट थिंग इज लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस। क्यों? हम लोग पहले बता दिया था। नेक्स्ट थिंग इज ओल्ड रेजी, मतलब पुराने अमल में जो था मोनार्क सिस्टम, ये मोनार्क सिस्टम जो टैक्सेस बता रहा है, दे डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस, ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। देखो ओल्ड रेजिम में मोनार्क का कुछ पावर नहीं था। अगर टैक्स को इंक्रीज करना है तो जनरल स्टेट का एक मीटिंग करना होगा, स्टेट जनरल को लेके लोगों को लेके एक मीटिंग करना था, उसके बाद किंग टैक्स इंक्रीज करता था। नेक्स्ट थिंग इज स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू व्हिच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और क्या हुआ? लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल्स आउटब्रेक होने से पहले। नाउ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव बट द थर्ड स्टेट सेंट 600 रिप्रेजेंटेटिव। देखो उस टाइम क्या था, वोटिंग प्रोसीड्यूर जो था, वोटिंग प्रोसीड्यूर कुछ डिफरेंट था, लेकिन थर्ड स्टेट ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। थर्ड स्टेट ने डिमांड किया ईच मेंबर वुड हैव इक्वल वोट, मतलब जितना सारा आदमी है सबको इक्वल वोटिंग राइट देना होगा। क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट मिला के 300 रिप्रेजेंटेटिव को सेंड किया, 300 इन लोगों का दोनों स्टेट मिला के, लेकिन थर्ड स्टेट खुद का 600 है मेंबर। तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि तुम लोग जितना चाहे अगेंस्ट में वोट डाल दो, हमारे पास 600 मेंबर है, अगर एक ईच वन कास्ट सेम और इक्वल वैल्यूड वोट, देन डेफिनेटली द डिसीजन ऑफ द थर्ड स्टेट विल बी एस्टेब्लिश्ड। दैट्स व्हाई दे डिमांडेड इक्वल वोट, ईच मेंबर वुड हैव 1 vote and each vote should have equal values। ठीक है, अब देखो द स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर। फियर क्यों आया? देखो नेशनल असेंबली जिस टाइम बहुत बिजी था वर्साइलिस में, ड्यूरिंग दैट क्यों दे वर रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीपल? रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द फ्रांस they seemed with turmoils। क्यों turmoil? क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम बैड हार्वेस्ट हुआ था और सीवियर विंटर भी था, इसीलिए ब्रेड का प्राइस बहुत इंक्रीज हो गया एंड ऑफन दे ब्रेक्स एक्सप्लॉयटेड। ड्यूरिंग दैट टाइम जो बिजनेसमैन था उन लोगों ने होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये अगर सप्लाई ठीक नहीं रहेंगे तब वुमेन आदमी जो जिनको खाना बनाना था, इन लोगों ने बहुत गुस्सा आ गया कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों को तो कुछ ब्रेड चाहिए, बिना खाए हम लोग कैसे जिएंगे। इसीलिए एक तो बहुत ठंड आ गया था, दूसरा ब्रेड हार्वेस्ट मतलब बैड हार्वेस्ट, इसीलिए व्हीट प्रोडक्शन बहुत रिड्यूस हो गया था। इसीलिए और दूसरे बात जो है, जो सप्लायर था उन लोगों ने
होर्डिंग करने स्टार्ट कर दिया। एज ए रिजल्ट डेफिनेटली द प्राइस विल गो हाई एंड दिस थिंग स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल ऑफ फ्रांस। देखो बेस्टाइल में आग लगा दिया इन लोगों ने। अब क्या हुआ, देखो फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अर्लियर Louis XVI was the supreme. Now, in order to keep his position intact, he had to compel to bring about constitutional monarchy. मतलब किंग रहेगा, इसके साथ थर्ड स्टेट और अदर स्टेट का पीपल जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग भी रहेगा इनके साथ काम करने के लिए, ताकि he cannot become absolute one. So on 4th August 1789, the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. जितना सारा टैक्सेस ऑब्लिगेट किया था, मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स ने इन लोग सब हटा दिया। अब देखो फ्रांस में जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? देखो first and foremost thing is that I must say the declaration of rights of man and citizen. Why man and citizen? Citizen you can understand, apart from citizen, number of outside peoples were there in France. That is why it is declared the declaration of right of man and citizen, मतलब हर एक आदमी को कुछ ना कुछ right मिलेगा। This constitution for the first time limit the powers of monarch. He will remain no longer being an absolute one. Next thing is separation of power. That means legislative, executive and judiciary. This power must be divided and they are not be allowed to interfere among the activities of other works. No, it is not. Now the rich man alone got the right to vote. मतलब जिसके पास पैसा है उन लोगों को वोटिंग राइट दिया गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा और नो राइट टू पैसिव सिटीजन। ये पैसिव सिटीजन कौन है? वेरी सिंपल, पैसिव सिटीजन मीन्स वुमेन। दे वर द हाफ पोर्शन ऑफ द सोसाइटी, येट दे वर टर्म्ड एज पैसिव सिटीजन एंड दे वर नॉट गिवन द राइट टू वोट। ओनली मेन, दोज हु आर रिच, they are getting the right to vote. ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। देखो नेशनल असेंबली में जो वोट हुआ था 1792 में, उस टाइम इन लोगों ने डिक्लेयर किया फ्रांस अब रिपब्लिक बन गया मोनार्क से। ये मोनार्क एबोलिश कर दिया और रिपब्लिक आ गया। लेकिन रिपब्लिक आने के बाद कंट्री कैसे चलेगा? उन्होंने बोला कि 21 इयर्स और अबव जिसका एज है और जितना जिसके पास वेल्थ है चाहे ना है, सब लोगों को वोटिंग राइट दिया जाएगा। फिर नेशनल असेंबली फॉर्म होगा। लेकिन उससे पहले जिस दिन ये खत्म हुआ, मतलब किंगशिप मोनार्किज्म खत्म हो गया, ऑन द वेरी डेट ऑनवर्ड्स हु इज सपोज टू रन द गवर्नमेंट? नाउ the ordinary people decide that one club is there that is called Jacobin Club. Jacobin Club, they were very much disciplined in nature and they followed a special dress code and they maintained special principles which attract the attention of ordinary people, and the ordinary people decided no, the power should be handed over to Jacobin Club. But the leader of Jacobin Club, that is Maximilian Robespierre, this person became the head of the country. Now this period 1793 to 94, this period is referred to as the reign of terror. Why it is so? क्यों हुआ? देखो रोबोस्फियर ने he followed the policy of severe control and punishment. Those who are standing against Robespierre, he will be executed. उनको हत्या किया जाता था। Robespierre government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices.
मैक्सिमम सीलिंग बना दिया वेजेस के और प्राइसेस के लिए, लेकिन मीट और ब्रेड का जो प्राइस था रैशनलाइज्ड कर दिया था, और इक्वालिटी वाज आल्सो शॉर्ट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, मतलब हर एक आदमी को उन्होंने ऐसा राइट दे दिया है जितना जो चाहे तुम बोल सकते हो, किसी भी को एड्रेस कर सकते हो, मतलब simply right to freedom of speech and expression he allowed. Now the question is, what is this? Do you know? This is called guillotine. मतलब a man who is against Napoleon, he had to face the death sentence with this machine. ठीक है, यहाँ पे मुंडिया अंदर कर दिया और यहाँ जाके गिर पड़ेगा मुंडिया, डेथ हो गया, एंड दिस वन इज कम डाउन नॉर्मली, beheaded the people. This is the system of guillotine, which is very much useful for Robespierre, as because those who are criticizing the government or Napoleon, he has to face this one, guillotine. ठीक है, अब देखो रेन ऑफ टेरर में क्या हुआ, एटलीस्ट 3 lakh people, mind it, 3 lakh people were suspected and arrested, and official reported 17,000 people were executed and 10,000 people died in prison without trial. Just consider what was the condition during that time. So this period is called reign of terror. ठीक है, देखो रेन ऑफ टेरर में क्या है, इतना सारा वायलेंट हुआ था फ्रांस रेवोल्यूशन फ्रॉम 1793-94 व्हेन द रेडिकल्स लीड बाय मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वर रनिंग द गवर्नमेंट। बहुत सारा रेवोल्यूशन हुआ करता था लेकिन कुछ नहीं हुआ, जो रेवोल्यूशन करेगा उनको खत्म, उनका लाइफ खत्म, एंड। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड रेन ऑफ टेरर। नाउ Maximilian Robespierre had to face the same gift which he was supposed to offer to ordinary people. That means guillotine में उनको भी डेथ फेस करना पड़ा। नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर नेपोलियन डायरेक्टरी रूल केम इनटू बीइंग इन फ्रांस। व्हाट इज डायरेक्टरी रूल? देखो जैकोबिन क्लब जब वेल्दियर सेक्शन को अलाउ किया था और मिडिल क्लास पीपल से पावर सीज कर लिया था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बनाया वहाँ पे देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वहाँ पे 5 मेंबर को लेके एक काउंसिल बना दिया था। इन लोगों को कहता था डायरेक्टर्स, और लेकिन ये डायरेक्टर को पावर दिया था, बट विद इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल दे वर वेरी मच क्लैश्ड विद देमसेल्व्स because they didn't have consensus on any issue. As a result, political instability came up and director paved the way for the rise of military dictator, that is Napoleon Bonaparte. क्योंकि डायरेक्टर्स जो था 5 पीपल जो था उनके पास कोई कॉन्सेंसस नहीं था। एक आदमी ने बताया ऐसा करना होगा, दूसरा बताया नहीं ऐसे करना होगा, तीसरा ने बताया ऐसा करना होगा, 14 ने बताया ये ऐसे क्यों ऐसे करना होगा। सो दे डिडंट हैव एनी कॉन्सेंसस व्हिच अल्टीमेटली ब्रॉट अबाउट पॉलिटिकल टर्मोइल, एंड पीपल फाउंड दैट they need to solve this problem. And how to solve this problem? Very simple. We have to hand over the power to the military dictator, that is Napoleon Bonaparte. Now the question is, who is Napoleon Bonaparte? Napoleon Bonaparte was a person of third estate में हुआ करता था। During the period of Louis XVI, when Louis XVI considered that my time is likely to be ended, so I have to protect myself, and for this purpose he formed a council system comprised of the people of third estate, and Napoleon Bonaparte was the head of the executives or council system. As a result,
Napoleon realized what is actual power and how to use the power. So, whenever the directory rule failed, then the people realized that it is only Napoleon who can save them. Now, the directory rule continued from 1795 to 1799, but they failed to maintain all the needs. क्यों? देखो, during that time plenty of problems were there in France, like civil war was going on, internal corruption was there, famine appeared, and war with neighboring countries. All these the ordinary people wanted to bring peace, but directory rule, they didn't pay attention in this sector. Rather, they wanted to keep strong control by using armies. As a result, people considered, no, these rulers should not be continued. Rather, we have to hand over the power to the military heads. Now, the question arises, in every society you can find almost 50% people were women section. During that time, you have to consider what was the role of the woman. देखो, woman did woman have a revolution? मतलब woman revolution में part लिया कि नहीं? देखो, the new constitution of 1791 where in new constitution women were passive citizen. In spite of that, they started political club, newspaper, etc. Women started. The two famous newspaper, one is the Society of Revolutionary, another is Republican Woman. The most famous newspapers introduced by women. Next thing is, their main demand was same political right as men. That means male female discrimination they wanted to reduce. They demanded right to vote. They also demanded to be elected to the assembly and hold political offices. वुमेन ने ये भी दावी किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नेक्स्ट थिंग इज revolutionary government did reduce laws that helped to improve the lives of the women. They also demanded the creation of state schools ताकि बच्चों ने स्कूल में पढ़ाई कर सके. Schooling was made compulsory for the girls, mind it, all the girls need to study, which was beyond dream few days back in the France. Next thing is their father could no longer force them into marriage against their will. That means during that time, even today also, the girls are forced to marry mainly based on the will of their parents. आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ दिन पहले भी ऐसा होता था. Rather, they made the consensus in such a way so that they can marry freely and divorce was made legal. अगर फैमिली में नहीं रह सके निकल आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लीगली तुम लोग आ सकते हो फैमिली को छोड़ के. Women could now train for job, could become artist or run small businesses. All these demanded and they have already executed. So, you cannot minimize the power of women in the revolution. This is the part of woman. Now, what about slavery? During that time, slavery was continued, but Maximilian Robespierre stopped it. Again, Napoleon reintroduced it. How was it happened? Just see the route map of triangular trade. देखो, triangular trade between Europe, Africa and America. अफ्रीका से ये लोग आदमी लोग जो था उस वहाँ पे उन लोगों को खरीद के अमेरिका में भेज देता था या तो फिर यूरोप में भेज देता था, ऐसा करता था. मतलब
like goat, hen, cow, the people were also sold like animals through a triangular trade. Now, slave trade began in 17th century and France merchants sailed from the port of Bordeaux or Nantes to the African coast and they brought slaves from local chieftains. मतलब अफ्रीका से लोकल चिप्टेन के साथ जुड़कर इन लोगों को पुअर पीपल को खरीद के मतलब ये लोग यहाँ लाता था या तो फिर यहाँ से फिर इधर भी सेल करता था. Next thing is the exploitation of slave labor made it possible to meet growing demand of European market. क्यों? For production of sugar, coffee, indigo. These production needs huge labor forces and these labors are made available through slave trade. Abolition of slavery, which was legislated in 1794 and all the slaves made free in France and overseas prisoners. But Napoleon reintroduced the slavery. Finally, in France, all the slavery permanently abolished in 1848. All the slaveries become cancelled. Since now, no slaves you can found in Europe. Now, during revolution, what was the condition of the people in everyday life? देखो, अगर revolution appear हो, तो during that time the life and property of ordinary people definitely disturbed and plenty of death case will appear, plenty of destruction will appear. So, under this condition, what was happened in France? देखो, revolutionary government took it upon themselves to pass law that would translate the ideas of liberty, equality. देखो, फ्रांस रेवोल्यूशन का जो लिगेसी है, आउटकम है, मतलब 3 items. One is liberty, next is equality, another thing is fraternity. These are the prime outcome of France revolution. So, once the Bastille stormed in 1789, they abolished censorship. मतलब किंग ने जो censorship बना हुआ था, मतलब कोई भी कुछ भी चाहे नहीं लिख सकता, इसको हटा दिया. Now the people are free to write down themselves, to express their opinion. Gradually it become changes. Next thing is, in the old regime, all written material and cultural activities in book, newspaper, play could be published or performed only after they had been approved by the censor of the king. Old regime में क्या होता था, king को अगर अच्छा लगे तो publish कर सकते थे, अच्छा ना लगे तो decline कर सकते थे. Next thing, now the Declaration of Right of Man and Citizen proclaimed. Each time freedom of speech and expression became natural right and inalienable, which cannot be separated. These things were introduced in France. Now, as I told you earlier, earlier Louis XVI was there. After Louis XVI, Maximilian Robespierre was there. After Maximilian Robespierre, after Maximilian Robespierre, you can find directory rules were there. After directory, Napoleon was there. So, these are the sequential analysis. Now, we are going to discuss about Napoleon Bonaparte. देखो, after 1799, Napoleon
got the power. But in 1804, Napoleon crowned himself as the Emperor of France. And after becoming the emperor, he started to conquer neighboring European countries. कहाँ पे? जहाँ पे वेल्थ एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, वहाँ से वेल्थ एंड नेचुरल रिसोर्सेज लेके फ्रांस को बहुत तरक्की कर सकते थे. नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. नेपोलियन wanted to make the Europe modernize. So he introduced many laws. कौन सा? Such as protection of private property and uniform system of weight and measurement. Decimal system also introduced. Whatever the activities Napoleon carried out, it ultimately made the king of other countries feared, like Prussia, Austria, Britain. They considered that if the activities of Napoleon come into our countries, then our chair remain no longer. So it is the time to stop Napoleon. That's why they come together, and in the year of 1815, in Battle of Waterloo, they finally defeated Napoleon. But the idea of liberty, democratic rights, which was finally established by Napoleon, and this is the prime outcome of French Revolution, it is still continuing in nature. In 1804, Napoleon introduced a special code called Napoleonic Code. Under this code, Napoleon simply made a massive control over the other political parties and the people those who were against his government. Apart from this, if we consider the prime achievements of Napoleon, what are the achievements, greatest achievements? देखो, नेपोलियन ने जो किया था, उसके पहला जो है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट थिंग इज हायर एजुकेशन सिस्टम, अ सेंट्रल बैंक, law code, and roads and sewer system become improved, and many more which are still in place today. मतलब उस टाइम जो स्टार्ट किया था अभी भी चल रहा है. So you cannot simply minimize the achievements of Napoleon in France. Rather, during the period of Louis XVI or Maximilian Robespierre or directory rule, he introduced plenty of reforms which were badly required to the people of France. Now the next thing is the consequences of the revolution. क्या हुआ था? रेवोल्यूशन जो हुआ उसके बदले में क्या हुआ फ्रांस में? देखो, स्टेट जनरल जो था मोर देन 150 ईयर्स कंटिन्यूड, बट इसको हटा के हम लोग क्या किया? नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया. नेक्स्ट, ये असेंबली क्या किया? डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन. नाउ ए नेशनल कन्वेंशन which abolished the monarchism. मोनार्किज्म को खत्म कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया. नेक्स्ट थिंग इज द इवेंट्स ऑफ रेवोल्यूशन वरीड द यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि उस टाइम कंजर्वेटिव रेजिम जो था, कंजर्वेटिव, CONSARVATIV, कंजर्वेटिव रेजिम जो था, उन लोगों को फियर हो गया कि अगर नेपोलियन ने ऐसा करने लगा तो हमारे कंट्री में भी आदमी हमारे अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे. इसीलिए ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और ग्रेट ब्रिटेन, इन तीनों का किंग जो था फ्रांस के अगेंस्ट में खड़ा हो गया और नेपोलियन को ख़त्म कर दिया इन द बैटल ऑफ वाटरलू. और लुई 16 एंड हिज वाइफ मेरी एंटोनियो जो था एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रिजन. जैकोबिन क्लब जो था नेशनल कन्वेंशन के तहत इन लोगों को अनस्लैश्ड कर दिया था और इन लोगों को नहीं रहने दिया.
So, these are the consequences of this revolution of France, and this is the prime discussion of French Revolution. As I told you earlier, this is the first time you are studying European history. So, you have to be very much conscious and careful. Just go through NCERT textbook properly, and if you follow this discussion twice or thrice, definitely you can get the chapter very easily. It is not so hard, very easy chapter, and I tried to make you understand in proper way, proper consequences, by maintaining consequences, so that you can make it understand, you can recapitulate it properly, you can remember it as per your desire. So, this is the prime analysis of this chapter, and I think you better understand it. And if you need any notes or if you have any queries, you can feel free to ask me. I have already given my WhatsApp ID along with my Insta ID in my description box. So, make your comment, share this line to your friends, and subscribe my channel. I am getting plenty of comments from you, plenty of requests from you. I am overwhelmed, and definitely I shall request you to subscribe my channel and share it. Thank you.